Assalamu alaikum everyone, hope you're all good and safe. So today's lecture is about Euler method. Basically what Euler method is, when we have initial value problems which include problems like this as shown here, like you have given a differential equation. A differential equation is then again an equation involving some kind of a derivative. So here the derivative y prime is involved, and this type of equation is called basically a differential equation. If a differential equation is given with some kind of an initial condition on the initial value of x, then this whole situation is called a whole problem is called basically initial value problem, right? So when we have these kind of problems, in order to solve these problems, okay, we use this method, which is Euler method. Now Euler method formula is very simple. It's evaluated by using this formula: I plus 1 is approximately equal to yi plus h multiplied by f of xi yi. Now we know, or you guys should know, that any differential equation can be written as y prime equals to f of xy, or another notation for y prime is dy by dx is equal to f of xy, right? So the function, you can compare your differential equation, right, as written here, the general differential equation, with your differential equation, and you can clearly identify what the function of x and y is, what f of x and y is, right? So let's suppose we have a problem, we have an initial value problem, and in this problem the differential equation is written over here, and you can clearly identify the function of x and y from this differential equation written over here. The function of x and y, f of x and y, is basically this. I'm gonna write it again here: f of x and y is equal to y minus x squared plus 1. This is we just identified this f of x y, this function, by just comparing this equation given to us with the general differential equation, right? So this things first, we write we just sort of identified the function. Then what's next? You have to identify, you have to memorize this formula, right? In order to solve the problem with the Euler method, you have to memorize the formula first. So in this formula, what you need to do, you need to have the function. So first you need to identify the function, which we did over here. Then we need to find the y. Now in order to find y1, we need y0, right? So I'm gonna just identify a few things. This is the function f of xy. This here, according to this problem, is basically our y0. This 0 here is basically x0, right, where x starts from 0 to end at 2, and how much the gap we have to take between each value is 0.5. So if we start from x equals to 0 and taking the interval 0.5, we will have x0 as 0, 0.5, x1 ho gaya, then 1, x becomes x2, 1.5 is x3, and 2, we have to stop at 2 because the interval is from 0 to 2. 2 is basically x4. So we have these 5 x values: x0, x1, x2, x3, and x4, right? We need to evaluate the corresponding y values, but you can see that only one y value is given to us. Okay, it has been provided to us in the question. Corresponding to x0, we have given y0, right? But we have to find y1, y2, y3, and y4. These all values from y1 to y4 we have to evaluate by using which formula? By using the Euler's method. Now I will show you how to operate this method. Basically we will have to construct a table. Okay, so the table goes like this. It's your choice. If you want to construct a table, if you think table makes your calculation easier, you can choose a table. If you want to do the step-by-step calculations, you can also do that. Just to have a concept of how this process is done, I'm just gonna use this table. Here we have independent variable x, we have dependent variable y. Then what we need in this formula, okay, in order to calculate the y values, what we need y's, we have y's. We need x, we have x. We need a function of x and y. We need f of xy.
what is f of x y in our problem? We have the function is y minus x square plus 1, right? So this is, I think, all we need, and if we put all this information in our formula, we will get the corresponding values of y, right? Now let's start. x0, x1, x2, x3 and x4. Let's extend this. Oh, this and this, right? Now x0, all the x's values are given to us in the by the help of h and the given interval. So it starts from 0, then 0.5, 1, 1.5 and 2, right? Then y, only one y value is given to us, which is y0, and y0 is here, it's also 0.5. all the other y values we have to evaluate, right? We have to calculate. We are not provided the other values, we are just provided with the y0 value, which is in the question, its initial value, right? So y0 is given to us. अब हमने क्या करना है? We just have to follow this row, और इस रो के अंदर हमारे पास x0 y0 जो भी वैल्यूज आती हैं, हमने इस फंक्शन के अंदर वो पुट करते रहना है, एंड देन पुट दिस थिंग इन आवर फॉर्मूला. हमारे पास फंक्शन में क्या है? एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करनी है. एक्स की वैल्यू है 0, वाई की वैल्यू है इस रो के अंदर 0.5. तो आप इस फॉर्मूले के अंदर एक्स की जगह 0 पुट करो, वाई की जगह 0.5 पुट करो, यानी कि 0 और 0.5 आपने कैलकुलेट करना है. वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल see that it turns out to be 1.5. now put this function value in your formula. आपके पास y1 is approximately equal to y0 plus h, which is 0.5, f of 0 and 0.5. this is basically the formula जिसमें आपने ये वैल्यू पुट करनी है. so if put this value in this formula, that means कि आप इसको h के साथ मल्टीप्लाई कराओगे और फिर y0 इसमें ऐड कर दोगे. तो h के साथ मल्टीप्लाई कराया, y0 ऐड किया, तो एट दी एंड आपके पास y1 आ जाता है 1.25. so put this value of y1 over here. टेबल को आप बेसिकली फिल करो, we're just filling the table. y1 आपके पास यहाँ पे आ गया, राइट? अब नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास क्या है? अब आपके पास जो फंक्शन के अंदर पुट करने के लिए एक्स और वाई वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ दिस, x इज़ 0.5, y इज़ 1.25. सो x इज़ 0.5, y इज़ 1.25. ये फंक्शन है अवेलेबल, दिस फंक्शन इज़ अवेलेबल टू यू. पुट दीज वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन द फंक्शन, एवेलुएट. इट टर्न्स आउट कि आपके पास जो आंसर है वो आता है 2. नाउ पुट दिस फंक्शन वैल्यू इन द फार्मूला, राइट? तो फार्मूले के अंदर जब आप पुट करोगे तो आपके पास y2 becomes y1 plus h, f of 0.5 and 1.25. इसको आपने h से मल्टीप्लाई कराया, h is 0.5 मल्टीप्लाई करा के आपने y1 इसमें ऐड कर दिया. इसी रो के मेंबर्स को हम यूज़ कर रहे हैं, ये y1 इसमें ऐड कर दिया. तो ये जब सारा हो गया तो आपके आंसर में आपके पास क्या आ रहा है? y2 की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन इट टर्न्स आउट टू बी 2.25. देन अगेन अब x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1, और y की वैल्यू है आपके पास 2.25. so you put these values of x and y in this function and evaluate. जब evaluate हो जाएगा तो आपके पास आ गया 2.25 वाला, तो ये आपके पास भी 2.25 आ जाएगा. since x equals to 1 तो ये 1 कैंसिल हो गया, y as it is आ गया. अच्छा जी, ठीक हो गया. अब ये आपके पास फंक्शन आ गया. यू नीडेड दिस फंक्शन इन योर फार्मूला, यू जस्ट पुट दिस फंक्शन वैल्यू इन दिस फार्मूला. एच से मल्टीप्लाई हमने क्या करना है? फॉर्मूले के अंदर पुट करने से मतलब क्या है कि एच से मल्टीप्लाई करें और उसमें इसी रो का y ऐड कर दें. तो एच से मल्टीप्लाई कराने के बाद यानी कि आपका y3 कैसे आएगा? y2 प्लस एच f of 1 and 2.25. ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है f of 1 and 2.25. इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, h भी आपके पास गिवन है, y2 भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे. सो ऑल दिस पुट ऑल दिस वैल्यूज इन योर फार्मूला एंड यू विल गेट सॉल्व एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y3 which is 3.375. सिमिलरली इन दिस प्रोसेस कंटिन्यू दिस प्रोसेस. x की वैल्यू आप 1.5 रखोगे, 1.5, और y की वैल्यू अब आपके पास है 3.375. फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर पुट करो, आपके पास आ जाएगा 2.125.
ठीक है। अब इस फंक्शन के वैल्यू को आप एच से फॉर्मूले के अंदर पुट करो, इसका मतलब है कि आप एच से मल्टीप्लाई कराओ और फिर फिर आप इसमें y ये वाला इसी रो का y आप ऐड कर दो, यानी कि पिछला वाला y आपने अगले y के लिए y4 के लिए आप y3 ऐड कर रहे हो, y3 के लिए आपने y2 ऐड किया था, y2 के लिए आपने y1 ऐड किया था, y1 के लिए आपने y0 को ऐड किया था, ठीक है। तो हम इस तरह से चल रहे हैं। अगर इस तरह समझ नहीं आ रही तो यू कैन सी ईजिली कि फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से बन रहा है। तो y4 के लिए आपके पास आ जाएगा y3 प्लस एच एक्स है आपके पास है 1.5 और ये है 3.375। जब आप इसमें इस फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे, एच की वैल्यू पुट करोगे, y3 की भी पुट करोगे, यू विल गेट दी वैल्यू फॉर y4, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ इस फंक्शन वैल्यू को, ये सारी चीज़ें जो भी हमें फॉर्मूले के लिए रिक्वायर्ड थी उनको हमने फॉर्मूले के अंदर पुट किया, एंड इन टर्न इन द एंड वी गेट आवर value for y4, which is approximately equal to 4.4375, right? So since we had values up till x4, so we just needed to evaluate the values up till y4, right? कि हर x value का corresponding y value हमारे पास मिल जाएगी। That's it, that's all we have to do, और further calculation करने की ज़रूरत नहीं है, because obviously we do not need to go further, we do not need to go to find y5 and so on, because we do not have x5, right? So this is the whole process. This is how you find out the table, fill the table, and by Euler's method, and this is how you find out the solution. Now the thing to think here is that whenever we talk about the solutions of differential equation, or if you Google something about the solutions of differential equation, you will notice that the solutions of this differential equation or any differential equation is basically some kind of a function. It's a function. This is basically the solution of this differential equation, right? कोई भी function हो सकता है, ठीक है। So basically what I'm trying to say is if we have a differential equation and we need to find the solution of that differential equation, so unlike algebraic equations, we do not get values as a solution. हमें values नहीं मिलती solution के तौर पे, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में फंक्शंस मिलते हैं एज अ सॉल्यूशन, ठीक है। पूरे फंक्शंस होते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर्स या न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं होती इनके सॉल्यूशन के तौर पे, राइट। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप ये फंक्शन नहीं निकाल रहे, राइट। आप ये फंक्शन नहीं निकाल रहे, इंटीग्रेट करके आप फंक्शन नहीं निकाल रहे, आप इस फंक्शन को सेटिस्फाई करने वाली ये वैल्यूज़ निकाल रहे हो। Hope you get this point, right? You are by Euler's method, we do not need to evaluate the function solution जो है, ये हम function नहीं निकाल रहे, we just evaluate, we are just, this method helps us to approximate the values of this solution function. ये अगर आपको इसका function दिया हो, let's suppose ये differential equation थी ना, अगर आपको उसका exact solution बताया हो, right, कि ये जो है इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल इसका आई डू हैव एन एग्जैक्ट सोल्यूशन ओवर हियर, लेट्स से एग्जैक्ट सोल्यूशन इज़ y इक्वल्स टू t प्लस 1, सॉरी x है तो ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 0.5 e की पावर x। ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास सोल्यूशन फंक्शन आता है वो ये है, ठीक है। सो हम इस तरह से सॉल्व करके ये सोल्यूशन फंक्शन नहीं निकाल रहे, हमें जो आयलर मेथड है वो इस फंक्शन की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ दे रहा है बेसिकली, राइट। सो बिकेम प्रिटी ईजी फॉर अस टू visualize the answer to this differential equation without even having a function, ठीक है ना। so this is a whole process basically, so that's it, that's all you have, and if you are given an exact solution, so it's probably given to you because they will need you to calculate the error between the exact solution values and your approximated values, right? सो अगर ये दिया हुआ है एग्जैक्ट सोल्यूशन तो वो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए दिया हुआ है कि वो आपको कहना चाह रहे हैं कि आप एरर निकालें अपनी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ का एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड इट, इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम्स लेट मी नो, थैंक यू।